quite excited for Udaipur because I've been here earlier for like almost 10 days and I really loved it here. And even this time when we entered Udaipur, the vibe of this place is just like top notch, and it's quite hilly, and I'm a mountain person, so I really like that, and I was looking forward to it. And on my last trip there was just one place that I couldn't visit, that is Sajjangarh Fort, and today we are leaving for Sajjangarh Fort in like next 15 minutes, so I should get ready. Okay, let's get ready. Makeup bag. We are going to apply a bit of makeup today. I just bought this BB cream randomly and it's quite good. It's from Pond's, but it's quite good, man. It's so small, it's so cute. I just bought it because it was so cute, and I thought I have a lot of patches these days, so maybe it will cover it up for my pictures and stuff. It's really nice. Never thought Pond's would make something this good. I take just one pump and apply it all over my face because I don't want it to look very cakey and makeup-y. I just want it very natural, but just you know, hint of freshness. Okay, so this is going to turn into a makeup tutorial, I think. I am applying under eye cream because I didn't sleep well. मुझे वैसे तो BB cream के पहले लगाना चाहिए था, but it's okay. Next, we are going in with the liner. Liner is done. I just underlined my eyelid. That's it. I did not do a wing or anything like that. Just a normal liner. We're all ready, let's go now. Let's go! Lift on here. And I'll show you my OTT. Ground floor. Loving my kurta. I already had this black, but it's contrasting it well, so it's like okay. हाँ जी, क्या हालचाल तुम सबके। हम हैं उदयपुर में, कौन से होटल में? चुंडा पैलेस, चुंडी वाले चुंडा वाले पैलेस में अब हम जा रहे हैं काले अंधेरे से निकल के सज्जनगढ़ मानसून पैलेस। दिख रहा हूँ क्या मैं तुम्हें? घंटा कुछ नहीं दिख रहा इसमें। काले लोगों के साथ हम जा रहे हैं सज्जनगढ़। इसको मानसून पैलेस भी बोलते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक, व्लॉग शुरू होने पहले ब्रेक हो गया। फिर ऐसे कर देते हैं। ऐसे कर दूं? हाँ, बोल, फिर से बोल। वो आ गई, लाइट आई थी अभी। दी करो दोबारा करो एक बारी। सही नहीं लग रहा क्या? वो तेरी लाइट जा रही है भाई पीछे से लाइट आ रही है, इसलिए ऐसे आ रहा है। पहले ट्यूब लाइट ऑन कर इसकी। रुक जा भाई। क्या आप देख पा रहे हो मुझे? ज़्यादा मुंह में बंदे अनब्लॉक कर देंगे, सब्सक्राइब। रुक जा। तो बाहर में जाइए। आपको पसंद आ गया? मैंने बंद कर दिया था। अरे यार, अगर आपको ये व्लॉग पसंद नहीं आया तो आप भाड़ में जा सकते हैं, क्योंकि फिर आपको कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। यही सबसे अच्छा व्लॉग है पूरे भारत में। ये देखो, आलिया भट्ट 420p 420 पिक्सल वाली 1080 से भी ऊपर 5K। और ये देख लो स्क्विड गेम इंडियन वर्जन 5G होता है, 5K नहीं, 8K और 4K। हमारे पास एक मैन ईटर भी है। प्रियांशु भैया हाथ रेस करो। प्रियांशु भैया इधर सामने तो देखो यार, मैन ईटर। और ये है बिल्कुल टेक्निकल ट्रैवलर। आगे। हाँ जी, क्या हालचाल है तुम्हारे? जल्दी सब्सक्राइब करो।
ओ भाई मस्त आ रही है यार, मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। उसको तो दिखा दो। हाँ, इनको भी देख लो, गोरखपुर की गुंडाई। ऊंचाइयों का सामना करते हुए हम पहुंच गए सज्जनगढ़ फोर्ट। हवा चल रही है मजेदार, मतलब सॉरी वाह, बालों की धज्जियां उड़ गई। इतनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, इतना अच्छा मौसम है ओवरऑल, मतलब एकदम ऐसे दिल खुश हो गया मेरा यहाँ पे आके, क्योंकि इतने दिन से हम लोग थे, इतनी गर्मी हो रही थी डेली और हम एंजॉय नहीं कर पा रहे थे गर्मी की वजह से, बट राइट नाउ इट्स सो प्लेजेंट। आई एम सिटिंग जस्ट बाय द विंडो एंड इतना अच्छा लग रहा है, इट्स लाइक दिल खुश हो गया। हाय गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ पहुँच चुके हैं? नटराज डाइनिंग हॉल में आज एक्सपीरियंस करने के लिए। यस, उदयपुर में बेस्ट है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा साथ में। जोहा अपनी शान भी तो मैं ही बोल देता हूँ। मैं थक गई हूँ, मुझे भूख लगी है। सो वी आर इन नटराज राइट नाउ। ये इसको मतलब मेनली ये थाली इसके लिए बहुत स्पेशल है, यहाँ पे लोग थाली खाने के लिए स्पेशल आते हैं और हमारी बहुत बड़ी सी थाली है जिस पर भी खाना आना बचा है, वेट कर रहे हैं उसके लिए। एंड इफ़ यू आर इन उदयपुर आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट दिस प्लेस। अभी खाना तो नहीं खाया बट मैंने सुना बहुत इसके बारे में। बहुत जम खाना है। ठीक है, ये छाछ है। नहीं क्या है ये? कड़ी। नहीं मैं खाता ही नहीं। वेरी वेरी नाइस फूड। बहुत दिन बाद मैं ऐसे खा रही हूँ प्रॉपर रोटी और ऐसे खाना ना, दिल खुश होगा मेरा बिल्कुल।